Second year English, lecture number 46, topic first year at Harrow, chapter number 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, second year class? I hope you will be fine and enjoying a safe and sound health, and may Allah keep you safe and healthy forever. Ameen summa ameen. Students, welcome to my class. And beta, today we are going to start part 2 of your English book. You know that your English book is divided into 2 parts, and from the first part we have read 6 chapters, and today we shall start your part 2. And the first chapter of this part is First Year at Harrow, and it is written by Sir Winston S. Churchill. Winston S. Churchill means Winston Leonard Spencer Churchill. ठीक है बेटा. He was a statesman, writer, orator, and also a leader who led Britain to victory in the Second World War. Beta, he was born on 30th November 1874 and he died on 24th January 1965. Dear students, do you know he had been the Prime Minister of Britain from 1942, 1945 and from 1951 to 1955. It's mean beta, he was a conservative Prime Minister for 2 times. ठीक है. Conservative बेटा political party का name है. ठीक है. So he was elected PM for twice, and beta, due to his great part and due to his great role in the Second World War, in the crisis of the Second World War, he is knighted by Queen Elizabeth knighted as Sir. That's why beta his full name is Sir Winston Churchill, because he was knighted होता है खिताब जो मिलता है. ठीक है. And he was knighted on April 24, 1953. उसको 24 April 1953 को बेटा he was knighted, mean to say he was given the title of Sir by Queen Elizabeth. So he was a great political leader, and beta he was a very much famous writer as well. And in this in this essay we see that how Churchill he focuses on the importance of English language. In his views, every student should know English language, and beta why he does say all this, because in this essay we find that he generally shares with us his own personal experience, that when how and when he got admitted at Harrow. Harrow beta is the name of the school, and it was a very famous school. ठीक है. So he told his own, you can say, memories of his childhood, and how did he went to school and how did he do in examinations, because he didn't like the examination system. In his views, the examiners, they should ask the students what they know, but unfortunately his examiners, they asked from him what he did not know. उससे वो पूछती जो वे नहीं जानता था. In spite of that thing he knew. So beta, you can say he explained all his story in this essay. So beta, let's start. So I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations, through which for the next 7 years I was destined to journey. So beta, as you know that all the students, they get afraid of examinations. This is, you can say, a general phenomenon or the basic fear of the students. ऐसा ही बेटा, am I right? ठीक है. So like all of the students, Churchill did not like examinations. So beta, he says that कि अभी जो है वो I had scarcely mean hardly पास बाय 12th बर्थडे. अभी तो कहता मेरी जो है वो 12वीं सालगिरह ही गुजरी थी. मीन टू से ही वाज जस्ट 12 years old. ठीक है. व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन. Inhospitable mean
अनवेलकमिंग, अनफ्रेंडली रीजन, जो इलाका था, एरिया ऑफ एग्जामिनेशन, मीन टू से ऑफ कोर्स व्हेन यू एडमिट इन स्कूल you have to pass through from the examinations willingly or unwillingly. This is the rule and this is the fate of every student. Okay, do you agree with me, students? Yes. Through which for the next 7 years I was destined to journey. और कहते हैं कि destined mean fated, ठीक है, it was fated mean to say कि ये मेरी किस्मत में लिख दिया गया था that I have to pass the next 7 years like this. So these examinations were a great trial to me. Trial mean affliction, trouble. So they were great trial to him because the subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. So beta, this was the main reason that the subjects which were liked by the examiners, कि जो एग्जामिनर्स है बेटा, जो सब्जेक्ट्स उनके लिए ज़्यादा प्रिकॉशियस थे, उनको अट्रैक्ट करते थे, वो वही थे जिनको जो है वो ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट, वो उनमें ज़रा कम ही दिलचस्पी लेता था, ठीक है. दैट्स वाई ही वॉज वीक इन दो सब्जेक्ट्स. सो आई वुड have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. So beta, we can get this idea that history, poetry and writing essays, it was his favorite subjects, ठीक है. सो द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, जबकि जो एग्जामिनर्स थे बेटा दे वर इंटरेस्टेड इन, पार्शियल मीन दे लाइक्ड, ठीक है, द मैथमेटिक्स एंड पर्शियन, एंड दीज सब्जेक्ट्स ही डिडंट लाइक, सो ही हैड लीस्ट इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स. ओके बेटा, एंड देयर विल प्रीवेल्ड, प्रीवेल मीन विन, ऑफ कोर्स दे वन because they asked questions from these subjects and he was unable to answer. So moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. बेटा इसके लिए और भी मुश्किल थी, although they were the part of his syllabus, but he says that कि they asked me such questions from this subjects that I was most invariably, ठीक है बेटा, इनवेरिएबली मीन कि वो मुश्किल से ही जो है वो हमेशा जो है वो उनको क्या करता, जो तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं दे पाता, जैसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर. आई शुड हैव लाइक टू बी एस्क्ड टू स्टे व्हाट आई न्यू. सो बेटा दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज every student, that the students demand that the examiners they ask the question that they know, जो वो जानते वो एग्जामिनर पूछें. तो बेटा ऐसा पॉसिबल है क्या? सो कहते हैं कि आई शुड हैव लाइक टू बी एस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू. दे ऑलवेज ट्राई टू एस्क व्हाट आई डिड नॉट नो. वो हमेशा क्या पूछते जो कि मैं नहीं जानता था. सो व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज दे सॉट एक्सपोज माई इग्नोरेंस. और कहते हैं कि जब मैं खुशी खुशी अपने इल्म का इजहार करना चाहता तो वो मेरी जो है वो इग्नोरेंस को शो करते, ठीक है, एक्सपोज करने की कोशिश करते. दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, आई डिड नॉट डू वेल इन examination. So beta, this was the story that why in Churchill's point of view, that why he was not good in the examinations, because the examiners they did not ask the question, they did not ask what the things that he did not know, जो कि चर्चिल नहीं जानता था वो चीज़ें उससे पूछते थे. ओके ठीक है बेटा, दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस टू हैरो. सो अब ये क्या हुआ बेटा, वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हैरो, एंट्रेंस में एंट्री, ठीक है, जो बेटा एंट्री होती है मीन टू से जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने पास करना होती है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है. सो कहते हैं कि जब मैंने दाखिले के इम्तिहान लेना था, मतलब देना था ख़ास तौर पे हैरो में, सो मिस्टर वेल्टन हार्वर टूक broad-minded view of my latent prose, he showed the discernment in judging my general ability. ठीक है, ओके बेटा. सो कहते हैं the headmaster Mr. Weldon however took a broad-minded view. broad-minded mean कि उनका बड़ा एक वसी उनका बेटा एक माइंड था, ठीक है, because he was the headmaster ना, so he thought broadly. सो कहते हैं कि he took a broad-minded view of my latent prose, he showed discernment. ओके बेटा, डिसर्नमेंट क्या है कि इंसाइट,
डिसाइडमेंट उसने शो की इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, कि वो मेरी जनरल एबिलिटी को जज करें, क्योंकि ये हिडन एबिलिटीज़ थी और जो कि उसके टीचर्स को नज़र ना आ सकी. सो ही सेइंग दैट मिस्टर वेल्डन वॉज द पर्सन हु लुक इनसाइड मी. ठीक है, दिस वॉज अ मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर. क्योंकि वो लैटिन पेपर में, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक लैटिन, सो ही वॉज अनएबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द पेपर. ठीक है बेटा, जो पेपर में उससे क्वेश्चन किए कि वो उसको आंसर करने के काबिल नहीं था. So what did he do? He said that I wrote in the examination, I wrote my name at the top of the page. ठीक है, सबसे पहले उसने अपना नाम लिखा. बेटा ऐसे स्टूडेंट्स वही करते हैं जो who don't know the answer. So he did the same. उसने क्या किया? I wrote down the number of the question 1. ठीक है, number of the question 1 जो है वो उसने लिखा. After much reflection मीन थॉट, बहुत सोच विचार के बाद आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट 10. फिर उसने बेटा नंबर 1 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लिख दी. सो बट देर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद इट दैट वाज ईदर रेलिवेंट और ट्रू. कहते उसके बाद जो है मैं उसके बारे में कुछ भी ना मज़ीद लिख सका जो कि रेलिवेंट थी उसकी या फिर वो ट्रू होती. सो इंसिडेंटली देर अराइव फ्रॉम नो वेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मट्स. और बेटा अब उसमें क्या मज़ीद एडिशन हुई कि वहाँ पे कहीं से पेपर के ऊपर ना एक ब्लॉट लग गया. ब्लॉट मीन स्पॉट लग गया, एक डॉट लग गया. ठीक है, किसी तरह से उसको नहीं पता चला कि वो डॉट कहाँ से आया. सो इंसिडेंटली देर अराइव फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मट्स. स्मट्स क्या होती है बेटा? डर्टी मार्क. कोई निशान वगैरह भी लग गए पेपर के ऊपर होता है ना कि द स्टूडेंट्स हु डोंट नो द आंसर दे आर इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़. ठीक है, सो बेटा ही सेड दैट आई गेज्ड फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टेकल. अब जो सैड स्पेक्टेकल था जो कि बड़ा उदास सा नज़ारा था बेटा, उसको वो देखता रहा. एंड देन मर्सीफुल अशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप विद ऑल द अदर्स एंड कैरीड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल. और बेटा उसके बाद जो अशर मीन जो अटेंडेंट था, ठीक है, उसने कहता कि मेरा पेपर लिया एंड देन पुट इट ऑन द हेड मास्टर्स टेबल. सो इट वॉज फ्राम these slender indications of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. कहते हैं कि उसके बाद slender mean जो है वो स्लाइड सी indications इलामात. ठीक है, कहते हैं कि जो इलामात थी, ठीक है, उसके बाद मुझे पता चला कि it was from these slender indications of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. कि वो हैरो में जो है वो पास होने के काबिल था, हैरो में एडमिशन लेने के काबिल था. सो इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट. कहता कि इट वॉज ड्यू टू हिम. क्रेडिट मीन कि इट वॉज हिज ट्रिब्यूट, इट वॉज ऑन हिज मैरिट. ये उसकी इट वॉज just due to Mr. Weldon. ठीक है, so it is very much to his credit. It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things, a man not dependent upon paper manifestation. मैनिफेस्टेशन मीन जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है, एक शो होता है, एग्जिबिशन होती है. ठीक है, सो इट्स मीन ही जस्ट डिड नॉट लुक एट द पेपर मैनिफेस्टेशन. मीन टू से कि पेपर को देख के ही डिड नॉट से दैट I was not worthy for getting admission at Harrow. So it was just because of that teacher, Mr. Spencer Churchill, he got admission at Harrow. And later beta, after studying there, you know that how did he come in front and how did he do all the things. So it is not said that by seeing a paper or you can say by looking at the student. It is not easy to say that what type of success he may achieve in his life. So nobody would ever judge that Mr. Spencer Churchill he would be able to become the prime minister. So beta, because he was an average student and that's why he was taught English, whereas the brilliant students they were taught Latin and other subjects. So beta, an average minded student, he in the later days he was made PM for twice. So it's mean that he had a lot of qualities but it were not very obvious at that particular time.
Okay beta, I hope you have well understood. And but if you find any difficulty, you may ask me, and you have to learn the similar meanings and read the text again and again, so that you may be able to answer the questions that are asked at the end of the lesson. Okay beta, till next lecture, remember me in your prayers. Stay blessed and Allah Hafiz.